हेलो डियर लर्नर्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूमोनिया। सो लेट्स सी व्हाट इज न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो न्यूमोनिया इज डिफाइंड एज द इन्फेक्शन ऑफ द pulmonary parenchyma and it is caused by various bacterial species, virus, fungi and parasites. Okay, so basically न्यूमोनिया जो है वो लंग पैरेनकाइमा का इन्फेक्शन है और इट मे बी कॉज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, इवन पैरासाइट से भी हो सकता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के शुरू में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि CAP। CAP मीन्स कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। ओके, जो नेम सजेस्ट करता है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया मीन्स ये कम्युनिटी से एक्वायर्ड होता है, मीन्स आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल और एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी द पेशेंट डेवलप्स कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। What is HCAP or HCAP? It stands for Healthcare Associated Pneumonia. मीन्स अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में है, हीमोडायलिसिस पेशेंट है, आउट पेशेंट केमोथेरेपी चल रहा है, पेशेंट को वुंड केयर चल रहा है, सो इन दैट केस अगर पेशेंट को न्यूमोनिया होता है, इट इज नोन एज द हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। HAP stands for हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। सो अगर पेशेंट को न्यूमोनिया होता है more than 48 hours from hospitalization or admission, then it is known as hospital acquired pneumonia. VAP or VAP stands for ventilator associated pneumonia. अगर more than 48 hours from endotracheal intubation patient को pneumonia हो जाता है, so that is considered as ventilator associated pneumonia. So these are certain common terminologies है जो हमको पता होना चाहिए once we start talking and reading about pneumonia. Classification of pneumonia. न्यूमोनिया का क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल लोकेशन वाइज हो सकता है, नहीं तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज इटियोलॉजी हम न्यूमोनिया क्लासिफाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन न्यूमोनिया कैन बी लोबर और नहीं तो ब्रोंकोन्यूमोनिया। लोबर न्यूमोनिया नाम से पता चलता है a particular lobe of the lung will be involved. Whole lobe of the lung may be involved in case of lobar pneumonia. In case of bronchopneumonia, there will be patchy involvement of the lung. Okay, a single lobe may be involved or two lobes may be involved, but whole of the lobe involvement नहीं होगा. The involvement will be in patches. Okay, here and there in patches. Etiological classification, depending on the causes of pneumonia हम classify कर सकते हैं pneumonia को। Primary pneumonia also known as community acquired pneumonia, that is CAP, जो हम अभी डिस्कस किए हैं। Secondary pneumonia, secondary pneumonia results due to weak host defenses. Okay, it may be nosocomial pneumonia. Nosocomial means hospital acquired, जो hospital में आके patient को infections होता है, that is known as नोजोकोमियल। ओके, सो न्यूमोनिया भी नोजोकोमियल हो सकता है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जो स्टमक का कंटेंट है वो अगर एस्पिरेट होता है लंग्स में तो दैट इज नोन एज एस्पिरेशन न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हॉर्स इंक्लूडिंग HIV रिलेटेड न्यूमोनिया। सो ये जो है नंबर 1, 2 and 3, दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी न्यूमोनिया। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो न्यूमोनिया यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द एल्वियोलर लेवल एंड द होस्ट रिस्पॉन्स टू दोस पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल। इफ द होस्ट immunity is not proper, host response, immune response is improper, then ultimately there will be development of pneumonia. The organism may enter into the lung via inhalation, okay, it may enter via aspiration, okay, और hematogenic spread भी हो सकता है। So these are the routes of acquiring infection in the lung. अगर हम बात करते हैं about the host defense, हमको डिफेंस क्या क्या होता है, होस्ट का डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द डिफेंस मैकेनिज्म तभी पेशेंट को
न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है, बिकॉज होस्ट डिफेंस इज नॉट एक्टिंग अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. सो जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है वो इजीली लंग्स में चला जाता है, जाके वहां पे न्यूमोनिया करता है. सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द host defense in the upper airways, that is in the nasopharynx and oropharynx. In the nasopharynx, nasal hair, even turbinates, okay, mucociliary apparatus and immunoglobulin A secretion, ये जो है ये एक्ट करता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ओरोफेरिंग्स में saliva, sloughing of epithelial cells, local complement production and interference from a resident flora. ये है host defense mechanism in the oropharynx. In the conducting airways means trachea and bronchi. In the conducting airways क्या क्या होता है host defense? Cough is a very important host defense, a very important protective mechanism. Wherever any foreign thing tries to enter in the trachea or bronchi, there will be cough as a reflex phenomena. Epiglottic reflexes, sharp angle branching of airways, mucociliary apparatus again, and immunoglobulin production. Not only immunoglobulin A, even immunoglobulin G and immunoglobulin M. So ये सारे हैं host defense mechanism in the trachea and bronchi. Lower respiratory tract में, that is in terminal airways and in the alveoli, alveolar lining fluid which contains surfactant, immunoglobulins, complement factors, fibronectin, these are the host defense, important host defense mechanism. Cytokines जैसे कि interleukin 1 and tumor necrosis factor. Then alveolar macrophages are also important host defense mechanism at the level of alveoli. Okay. Whenever there is entry of any organisms, macrophages will try to engulf them, and inside the macrophages the organisms will be killed. Polymorphonuclear leukocytosis and cell mediated immunity, ये भी other important host defense है in the lower respiratory tract. ये जो image है इसमें हम देख सकते हैं the difference between a normal alveoli and an alveoli in case of a pneumonia patient. This is the normal alveoli. We can see that there is normal alveoli lining. These are the blood vessels. Okay, these are the blood vessels. Okay, the lining of the alveoli is maintained, and inside the alveolus there is no fluid or there is no presence of any polymorphonuclear cell. Okay, but if we look at the abnormal alveoli, okay, on the right hand side, okay, this alveoli represents an alveoli in the patient of pneumonia. In this alveoli inside there is fluid. Okay, there is exudation of fluid inside the alveoli, as well as this is a polymorphonuclear cell. There is infiltration of the alveoli with polymorphonuclear cells as a response to the inflammation or infection. Okay, अगर alveoli में fluid filled हो जाता है, यहाँ पे fluid fill हो जाता है, the gas exchange becomes very much difficult. Okay, the gas exchange or the oxygenation of the inhaled air, okay, oxygen will be unable to reach the bloodstream because of presence of fluid inside the alveoli. अगर पैथोलॉजी में देखते हैं तो there are 4 stages of pneumonia. First stage is stage of congestion. उसके बाद जो stage है that is stage of red hepatization. Okay, then next the stage of gray hepatization and stage of resolution. Any case of pneumonia, the pathology will occur according to these 4 stages: congestion, followed by red hepatization, followed by gray hepatization, followed by resolution. अभी हम देखते हैं the risk factors of CAP, that is community acquired pneumonia. क्या क्या risk factors हो सकता है? Age, okay, extremes of age, then obesity, smoking is a very important risk factor, presence of or history of bronchial asthma or chronic obstructive pulmonary disease, presence of any immunosuppressive condition like if the patient is infected with HIV, institutionalization or old age home persons are also at increased risk of development of community acquired pneumonia,
and dementia, okay, loss of memory impairment. So these are the risk factors for the development of community acquired pneumonia. Now, if we look at the organisms which are involved in the or which are responsible for the community acquired pneumonia, in 40 to 60% cases कोई भी organism identify नहीं किया जा सकता है, okay. So 40 to 60% of the cases the organism remains unidentified. 2 to 5% cases mixed infection होता है, that means 2 or more agents are usually identified in 2 to 5% of cases. And बाकी cases में जो organisms है, most common organism involved is Streptococcus pneumonia. Almost 56% of the cases of community acquired pneumonia is because of Streptococcus pneumonia. Other organisms which are also responsible वो है influenza, H influenza, chlamydia, Legionella species, Staphylococcus aureus, Mycoplasma, gram-negative bacilli and viruses. Sometimes fungus also can cause community acquired pneumonia. If we talk about the microbiology of community acquired pneumonia, जो outpatients होते हैं, outpatients में common organisms are Streptococcus pneumoniae, commonest is Streptococcus pneumoniae, followed by Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenzae pneumonia, Chlamydophila pneumoniae and respiratory viruses. अगर इन पेशेंट है, वार्ड में है पेशेंट, तो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ओके, एम न्यूमोनी, एच इन्फ्लुएंजी, क्लमाइडिया न्यूमोनी, लीजियोनेला स्पीसीज, रेस्पिरेटरी वायरसेस एंड इट मे बी ए रिजल्ट ऑफ एस्पिरेशन न्यूमोनिया. इन पेशेंट आईसीयू में पेशेंट है तो कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, लीजियोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. कोमॉर्बिडिटीज इन एसोसिएटेड पैथोजन, ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट में कोमॉर्बिडिटी है तो बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटी सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रेफर दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स. सपोज अगर पेशेंट एल्कोहलिक है तो एल्कोहलिक पेशेंट में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स करता है न्यूमोनिया. अगर पेशेंट को सीओपीडी है, पेशेंट को डायबिटीज है, सो न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय सर्टेन organisms, certain specific organism for particular comorbidities. For example, patient alcoholic है. In case of alcoholism, the usual organisms involved are Streptococcus pneumoniae, oral anaerobes, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter species and Mycobacterium tuberculosis. अगर COPD है पेशेंट को और या फिर पेशेंट टोबैको इंजेस्ट करता है तो responsible organisms are Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella species, okay, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and Chlamydophila pneumoniae. Aspiration pneumonia में common organism involved is gram-negative enteric pathogen. Because aspiration में क्या होता है, patient aspirates whatever the gastric content is there. There is gastroesophageal reflux and then patient aspirates the gastric contents. So gram-negative enteric pathogen is important. Then oral anaerobes. अगर पेशेंट को लंग एब्सेस है, लंग एब्सेस में कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर MRSA, ओके, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, कम्युनिटी एक्वायर्ड, ओरल एनारोब्स, एंडेमिक फंगस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया. दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज ऑफ लंग एब्सेस. अगर पेशेंट को स्ट्रक्चरल लंग डिजीज है तो स्ट्रक्चरल लंग डिजीज, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकिएक्टासिस, इन दीज केसेस the organism which causes pneumonia are Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cephacea and Staphylococcus aureus. In case of advanced HIV, अगर patient को advanced HIV है, patient is having AIDS, okay, acquired immunodeficiency, then common organisms are Pneumocystis cerevisiae, okay, Cryptococcus, these are fungus, Histoplasma, Aspergillus and Pseudomonas aeruginosa. These are the common organisms causing pneumonia in a patient with advanced HIV AIDS. Zoonotic exposures and associated pathogen, okay. Bed or bird droppings exposure may result in Histoplasma capsulatum pneumonia. Okay, birds may result in Chlamydophilus psittaci, poultry avian influenza. From rabies, Francisella tularensis,
and farm animals or cat may result in infection with Coxiella burnetii, which is also known as Q fever. अगर हम symptoms देखते हैं, common symptoms or main symptoms of pneumonia, okay, in the if we talk about the systemic symptoms, patient will have high fever with chills and rigors in case of pneumonia, okay. Centrally, there may be headache, there may be loss of appetite and mood swings, okay. In the lungs, mainly patient will complain of cough with sputum or phlegm. Shortness of breath may be there, okay. In case of severe pneumonia, patient complains of shortness of breath. Pleuritic chest pain. Patient may also have hemoptysis if there is severe pneumonia with infection with certain specific organism. Okay, in the musculoskeletal system, there will be fatigue and muscle ache. Okay, in the vascular system, patient may have low blood pressure. Okay, if the patient develops sepsis or septicemia as a result of respiratory tract infection, pneumonia, then ultimately patient may present in septic shock with low blood pressure. Heart rate is usually high. Patient usually presents with fever with chills and rigor, and because of fever also there may be increase in heart rate. In GIT, patient may complain of nausea and vomiting, okay, and in the skeletal system there will be joint pain. Physical signs. If we examine the patient, we may have the following signs. We may find patient को fever रहेगा, okay. If we check the temperature, patient usually they have high fever, okay. Tachycardia, once the heart rate is more than 100 beats per minute, we call it as tachycardia. Tachypnea, normal breathing or respiratory rate is 12 to 14 per minute. If it is more than that, then we call it as tachypnea. पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है. हाइपोटेंशन में SBP और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज यूजुअली लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. लंग एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट के लंग्स में देयर मे बी क्रेपिटेशन. क्रेपिटेशन इज वन ऑफ द एडेड साउंड. सो इन द इन्वॉल्व रीजन जहाँ पे न्यूमोनिया है वहाँ पे पेशेंट को क्रेपिटेशन मिल सकता है ऑन ऑस्कल्टेशन. और पेशेंट के दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ न्यूमोनिया में जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया, we may get bronchial breath sounds. Breath sounds are basically two types: vesicular breath sound and bronchial breath sound. Okay, so in case of pneumonia consolidation, we usually get bronchial breathing. Vesicular breath sound is the normal breath sound which we may hear in normal lung. कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है. वन इज क्लासिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, द अदर वन इज एटिपिकल न्यूमोनिया. सो हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन क्लासिकल एंड एटिपिकल न्यूमोनिया. क्लासिकल न्यूमोनिया जो होता है दे आर यूजुअली सडन इन ऑनसेट सडन होता है क्लासिकल न्यूमोनिया में. whereas in case of atypical pneumonia the onset is insidious and there is gradual progression. In classical type of community acquired pneumonia, patient presents with fever and shaking chills. There will be chills and rigor in the patient. Whereas in atypical pneumonia, fever is usually low grade. There is productive cough in case of classical pneumonia, but in case of atypical pneumonia, there is dry cough. There is no sputum production. Blood tinge भी नहीं होता है cough में. Rusty sputum, blood stained sputum हो सकता है in cases of classical pneumonia. Okay, and general condition is usually poor in case of classical pneumonia. Whereas in atypical pneumonia, general condition is usually good. Okay, the patient will have a good general condition. If we talk about the mortality rate high, even up to 20%, quite high in patients with bacteremia in case of classical pneumonia. But in cases of atypical pneumonia, mortality rate is low. It is only 1 to 2%. If we compare with the classical pneumonia, the mortality rate atypical pneumonia में बहुत कम है, except in cases of legionella losses. अगर legionella infection हो रहा है तो atypical pneumonia में mortality rate भी बढ़ जाता है. The commonest causative organism for community acquired pneumonia is Streptococcus pneumoniae. Whereas for
Atypical pneumonia, the organisms are Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Rickettsia and certain viruses, okay, which causes the atypical pneumonia, typical community acquired pneumonia. Complications of pneumococcal pneumonia. बहुत सारे complications, serious complications हो सकता है in cases of pneumonia, okay. Pulmonary complication. There may be delayed resolution of pneumonia. There may be spread of infection to other lobe. एक जगह में infection हुआ, then it may spread to other areas, other lobes. Okay, if the pneumonia is severe, patient may develop respiratory failure, one of the dreaded complication of pneumonia. Pleura में क्या होता है? Pleura में there may be pleural effusion. Pleural effusion means presence of fluid inside the pleural cavity. So pneumonia के साथ साथ there may be pleural effusion, which is also known as synpneumonic effusion. Pleural effusion के अलावा empyema भी हो सकता है. What is empyema? Empyema is the presence of pus in the pleural cavity. Instead of fluid, there is pus in the pleural cavity, which is again a serious complication. The pus has to be drained. Circulatory complication, okay. The patient may have myopericarditis. That means patient को माइकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है. बिकॉज अगर पेशेंट को माइकार्डाइटिस होता है, माइकार्डियल इन्फ्लेमेशन होता है, देन पेशेंट में गो इनटू सर्कुलेटरी फेलियर. GI tract, there may be gastroenteritis, which is more common usually with viral pneumonia, which causes viral gastroenteritis. Skin में क्या हो सकता है complication? There may be rashes, okay, there may be erythema multiforme, okay. These are the skin manifestations or complications in the skin related to pneumonia. CNS में क्या होता है? There may be meningism. Meningism is one of the differential diagnosis of meningitis. In meningism also there will be presence of neck rigidity. Meningoencephalitis. As the name suggests, meningoencephalitis means inflammation of the meninges as well as brain parenchyma. This is again one of the dreaded complication of pneumococcal pneumonia. In the musculoskeletal system, there may be myalgia, that is muscle ache. In the joints, there may be arthralgia, that is joint pain. Hematological abnormality, there may be hemolytic anemia and thrombocytopenia. Then differential diagnosis. If we talk about the differential diagnosis, these are the following differential diagnosis for pneumonia. Pulmonary tuberculosis, one of the important differential diagnosis. Acute tuberculosis जो है वो भी as acute pneumonia present कर सकता है, presenting with fever, cough, all these things, chest pain. Pleural effusion. Pleural effusion जो है वो bacterial pneumonia से भी हो सकता है या फिर tuberculous pneumonia से भी हो सकता है. So we need to differentiate the pleural effusion of bacterial pneumonia, or if it is because of tuberculosis or it is because of some other cause like malignancy may also cause. Then connective tissue diseases like SLE may also cause pleural effusion. Rheumatoid arthritis may cause pleural effusion. So pleural effusion also is one of the differential diagnosis. Then अगर patient को pulmonary infarction है, then also patient may present with chest pain. तो हमको pneumonia से differentiate करना है pulmonary infarction. Pulmonary edema है अगर patient को, when the pulmonary edema is unilateral and localized, it may confuse us with the pneumonia. Acute bronchitis. Acute bronchitis may be patient will present with cough, with sputum production. There may be chest pain also. So acute bronchitis be one of the differential diagnosis here for pneumonia. Pulmonary thromboembolism. Pulmonary thromboembolism is also like acute presentation. Patient will present acutely with chest pain. The patient may have circulatory collapse. There will be tachycardia, tachypnea. So it may seem like a pneumonia episode also. Abdominal causes. कुछ abdominal causes है जो also mimic करता है like pneumonia. For example, cholecystitis, pancreatitis, amoebic liver abscess, subphrenic abscess. In all these cases, patient को fever होता है and patient may present with pain in the lower part of the
chest, which may confuse us with differential diagnosis of pneumonia. अगर हम ये इमेज देखते हैं तो इसमें we can see that there is patchy involvement in this area. There is patchy involvement. Okay, here also there is involvement. Okay, so this is the upper portion of the lower lobe and this is the lower portion of the upper lobe. Okay, तो ये एक्चुअली दिस सिग्निफाइज ब्रोंकोन्यूमोनिया, जहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं कि ब्रोंकोन्यूमोनिया में देयर विल बी पैची इन्फिल्ट्रेशन और पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग पैरेन्काइमा. ये जो इमेज है ये इमेज सिग्निफाई करता है लोबर न्यूमोनिया. वी कैन सी द होल ऑफ द लोअर लोब इज इन्वॉल्व, पूरा लोअर लोब डिस्ट्रॉयड है. दैट मीन्स दिस इज ए केस ऑफ लोबर न्यूमोनिया. डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम न्यूमोनिया के? मेनली डायग्नोसिस वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. क्या क्या कंप्लेन है पेशेंट का, कैसे शुरू हुआ, ऑनसेट कैसा था, कफ है कि नहीं, स्पुटम प्रोडक्शन है कि नहीं, सब हमको जानना है फ्रॉम हिस्ट्री. एंड देन वी नीड टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट में टिपिकल फाइंडिंग्स रहेगा जैसे हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं. इफ देयर इज कंसोलिडेशन there will be dullness on percussion, then on auscultation there will be bronchial breathing over the area of consolidation. There may be presence of crepitation as an added sound. एक्चुअली बोलते हैं कि अगर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन गुड है though it can diagnose a case of pneumonia with 60% accuracy. So such importance is history taking and doing a physical examination. If we talk about the other test, okay, then we can go ahead with an imaging. हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं. चेस्ट एक्सरे में हम PA व्यू या फिर AP व्यू, लैटरल व्यू हम ले सकते हैं एंड देख सकते हैं इफ देयर इज एनी फाइंडिंग्स. ओके, पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट हो सकता है विच कन्फर्म्स द डायग्नोसिस. वी कैन असेस द सिवियरिटी ऑफ द इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द चेस्ट एक्सरे, जिससे हम प्रोग्नोस्टिकेशन कर सकते हैं. इवन पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट देख के हम इटियोलॉजी भी शायद आइडेंटिफाई कर सकते हैं. For some cases we can identify the etiology even. In this chest x-ray we can see that there is a homogeneous opacity, okay, involving the middle lobe of the right lung. Okay, so this is probably a pneumonia which is involving the middle lobe of the right lung. In the next image we can see that the upper portion of the right lung is involved. There is homogeneous opacity in the upper portion of the right lung. This can also be a case of pneumonia, but in this particular x-ray we need to keep in mind that we can see a definite margin. Okay, here we can see a definite margin which is rarely seen in cases of pneumonia. अगर pneumonic consolidation है तो उसका definite margin नहीं रहता है. Margin usually irregular होता है, उसका definite कोई shape नहीं रहता है. But in this X-ray there is a definite rounded kind of shape, okay, and there is a definite margin we can see. So it may be a case of lung mass, but we can keep pneumonia as one of the differential diagnoses depending on the presentation of the patient. Infiltration patterns and pathogen. Okay, infiltration pattern from x-ray से हम infiltration pattern देख सकते हैं, उससे हम identify कर सकते हैं कि which organism may be responsible. If it is a lobar pneumonia, responsible organisms are usually Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenzae and gram-negative organism, gram-negative bacilli. अगर patchy involvement है तो responsible organism may be atypical organism, viral causes and Legionella. अगर interstitial infiltration है then most common organism responsible are viral pneumonia हो सकता है, okay, Pneumocystis carinii pneumonia, Legionella pneumonia हो सकता है. अगर कैविटेशन है लंग में, कैविटी से रिलेशन है तो इट मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक इन्फेक्शन, क्लेप्शियला इन्फेक्शन, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड इन्फेक्शन विथ फंगस. ओके, सो
cavity relation of lung, we can have a differential diagnosis of these organisms. Okay, common is, of course, commonest cause of cavity in the lung is tuberculosis. Other than that, anaerobic organism, Klebsiella, Staph aureus and fungus may also cause cavity dilation in the lung. If there is large effusion, it can be due to Staphylococcus infection, okay, anaerobes or Klebsiella infection. This is a CT scan of the chest where we can see that there is presence of infiltration or consolidation, we can say, in the right lung. Okay, so this is the area of consolidation. Okay, लैब एग्जामिनेशन, हम लैब एग्जामिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन डू अ स्पुटम एग्जामिनेशन. इफ द पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग स्पुटम, then you can go ahead and ask for the patient to give sputum sample so that we can do a gram staining. We can do a culture and sensitivity from the sputum. Also we can do and go ahead with AFB staining, acid fast bacillus staining. We can do examination from bronchoalveolar lavage also. If facility is available, we can do a bronchoalveolar lavage. BAL stands for bronchoalveolar lavage. So if facility is available, we can do a bronchoalveolar lavage, and from the sample of bronchoalveolar lavage, again we can do gram staining for AFB, that is acid fast bacilli, or we can also do a culture and sensitivity test, CST. Other lab examination what we can do is that serological test हम कर सकते हैं. Serological test में very importantly for Legionella, urinary antigen for Legionella pneumophila can be identified. Indirect immunofluorescence test हम कर सकते हैं for the identification of IgM and IgG for diagnosis of chlamydia pneumonia and mycoplasma pneumonia. So these are the specific serological tests for Legionella pneumonia and chlamydia mycoplasma pneumonia. Blood culture कर सकते हैं हम, and we can identify if there is any presence of organism. बाकी जो टेस्ट हैं वो हम कर सकते हैं to see if there is any involvement of other organ. Okay, per se, we can do a complete blood count. We can look for the electrolytes. We can go ahead with the liver function test. हम kidney function देख सकते हैं हम creatinine करके. Arterial blood gas analysis is necessary if there is impending respiratory failure और patient respiratory failure लेके हमारे पास आया है, then we need to do a arterial blood gas analysis and see the different parameters like pH, then bicarbonate level, PaCO2 level, ये सब हमको देखना है, and depending on the acid base abnormality हमको correction देना है. PCR, polymerase chain reaction. Okay, PCR can be done for the specific identification of organism, and other serological tests to identify the organism can also be done. Now there is something known as CARB criteria. What is CARB? CARB 65. बेसिकली जो कार्ब क्राइटेरिया है वो हमको हेल्प करता है टू डिसाइड कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे या फिर घर पे ट्रीट करेंगे. अगर हॉस्पिटल में ट्रीट करना है पेशेंट को तो हम पेशेंट को कहाँ पे रखेंगे? वार्ड में रखेंगे या फिर इट इज़ बेटर टू कीप द पेशेंट इन द ICU केयर. C stands for confusion. U stands for BUN, blood urea nitrogen. R stands for respiratory rate. Okay, B stands for blood pressure, systolic and diastolic blood pressure. Age 65 stands for age, more than 65. So if there is confusion, it is given as 1 point. If BUN is more than 7, it is given 1 point. If respiratory rate more than 30, it is given 1 point. If systolic blood pressure less than 90 or diastolic blood pressure less than 60, it is given 1 score. Okay. If age more than 65, then score is given. We need to add up the score, and if CARB score is 0 or 1, then
हम वो पेशेंट को घर पे ट्रीट कर सकते हैं. नो नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट. अगर कर्ब स्कोर 2 है, ओके, इफ इट इज 2 देन पेशेंट में रिक्वायर शॉर्ट कोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. अगर कर्ब स्कोर 3 है देन पेशेंट हैज टू बी एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड. ओके, अगर कर्ब स्कोरिंग 4 है या फिर 5 है देन हमें पेशेंट को बेस्ट विल बी अगर हम पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, एंड वहाँ पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं. दैट मीन्स मोर द कर्व स्कोरिंग, okay, more serious is the illness, and as the curve score progresses patient needs treatment from home to hospitalized treatment. If we talk about the drugs or antibiotic treatment, empirical antibiotic treatment for outpatient, जो patient हम outdoor में देखते हैं उन patient को हम क्या drugs देंगे. Okay, if the patient is healthy, अगर patient healthy है and there is no history of any antibiotic exposure for the past 3 months, patient कोई antibiotic नहीं लिया है for past 3 months, then we can give macrolide antibiotic, that is azithromycin we can give to the patient, and second choice is doxycycline. First हम azithromycin से शुरू कर सकते हैं if the patient is not improving or the patient has contraindication to azithromycin, then हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं पेशेंट को. इफ पेशेंट हेल्दी नहीं है, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, ओके, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक एक्सपोजर फॉर लास्ट 3 months, अगर पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज है, ओके, एंड देयर इज एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक इन द लास्ट 3 months, देन व्हाट वी कैन डू, हम ऑल्टरनेटिव एजेंट यूज करना है, ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक यूज करना है. जो एंटीबायोटिक पेशेंट लास्ट 3 months में ले चुके हैं वो एंटीबायोटिक हमको नहीं लेना है. तो वी कैन गिव रेस्पिरेटरी फ्लूरोक्विनोलॉन्स लाइक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन 75 mg और जेमीफ्लॉक्सासिन we can give. Other than fluoroquinolones we can give a combination of beta-lactam antibiotic and macrolide. In regions जहाँ पे more than 25% high level macrolide resistant streptococcus pneumonia है, वहाँ पे we need to consider some other agents. We cannot use the above mentioned drugs. inpatient में हम क्या एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं empirically. अगर पेशेंट वार्ड में है then we can give respiratory fluoroquinolone और else हम दे सकते हैं a combination of beta-lactam and macrolide. अगर पेशेंट को हमने ICU में एडमिट किया है तो for that group of patient we can give beta-lactam like cefotaxime or ceftriaxone or ampicillin sulbactam plus macrolide. So combination of beta-lactam, higher beta-lactam and macrolide can be prescribed. Those who are allergic to penicillin, okay, इन ग्रुप ऑफ पेशेंट में हम रेस्पिरेटरी फ्लूरोक्विनोलॉन्स यूज कर सकते हैं लाइक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और जेमीफ्लॉक्सासिन. अगर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है पेशेंट को देन एंटी न्यूमोकॉकल एंड एंटी स्यूडोमोनल बीटा-लैक्टम प्लस एजिथ्रोमाइसिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन शुड बी यूज्ड. क्विनोलॉन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एमाइनोग्लाइकोसाइड. पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है and patient is allergic to penicillin, तो हम instead of giving these beta-lactam drugs we can give Aztreonam. अगर पेशेंट को मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन है कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA से then we need to add vancomycin और linezolid. अभी हम बात कर रहे थे about empirical treatment, that means हमको specific organism नहीं पता है. In that case, what are the antibiotics we are going to use? But now we will talk about the treatment of specific organism. Once we have seen the patient and the patient is producing sputum, हम sputum examination करेंगे, नहीं तो we will examine for bronchoalveolar lavage sample. टेस्ट करेंगे हम culture and sensitivity. उसके बाद we will identify the specific organism. Once the specific organism is identified, हम
डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. वी कैन टेपर ऑफ द एम्पिरिकल थेरेपी एंड वी कैन चूज स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स आफ्टर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट. For Streptococcus pneumoniae, the drug of choice is benzyl penicillin or amoxicillin. For Staphylococcus aureus, the drug of choice is flucloxacillin. For Legionella infection, clarithromycin or a quinolone like ciprofloxacin can be used. For psittacosis or Q fever, doxycycline is the drug of the choice. For mycoplasma, clarithromycin is the drug of the choice. For chlamydia pneumonia, clarithromycin is the drug of the choice. General consideration, okay. एंटीबायोटिक देने के अलावा हमको और भी जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पेशेंट रिक्वायरिंग सपोर्टिव केयर, सिम्टोमेटिक केयर, वो हमको देना है. एडिक्वेट हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट में बी डिहाइड्रेटेड, पेशेंट में कम इन शॉक, then we need to supplement fluid. IV fluid has to be given to maintain the adequate hydration. If patient orally ले सकता है fluid, then we will advise the patient to take adequate fluid orally. Oxygen therapy is necessary if there is hypoxemia. If oxygen saturation or SpO2 is low, maybe below 94%, in that case we will give supplemental oxygen to the patient. Assisted ventilation when necessary. If the patient is unable to maintain SpO2 above 94 even after oxygenation, okay, then patient may need to be given assisted ventilation. Assisted ventilation may be in the form of non-invasive ventilation or invasive mechanical ventilation, okay. Even in case of impending respiratory failure or if the patient presents with respiratory failure, then mechanical ventilation may be necessary. Severe community acquired pneumonia with hypotension, we need to give fluid resuscitation. We can even use glucocorticoid. If the patient is not responding, fluid से respond नहीं कर रहा है patient, in that time हम glucocorticoid भी use कर सकते हैं to raise the blood pressure. And definitely treating complication is very important. We have discussed a lot of complication may happen in case of pneumonia, so we need to take care of each and every complication, possible complication. हमको try करना है, अगर हम complication prevent कर सके तो that is the best thing we can do. But if we cannot prevent developing complication, then we can at least keep a notice and we should treat the complications. ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी. एंटीबायोटिक कितना दिन तक देना है पेशेंट को, कितना दिन तक ट्रीट करना है, ओके. मिनिमम ऑफ 5 days. इफ वी हैव स्टार्टेड एंटीबायोटिक थेरेपी, इट शुड बी कंटिन्यू फॉर मिनिमम ऑफ 5 days, okay. And patient should be afebrile for at least 48 to 72 hours, and then we can withdraw or stop the antibiotic treatment, okay. No more than one community acquired pneumonia associated sign of clinical instability. Longer duration of therapy is needed if initial therapy was not active against the identified pathogen or complicated by extrapulmonary infection. इन cases में हमको longer duration of therapy देना होता है patient को. Management of atypical pneumonia. Atypical pneumonia हम देखें, atypical pneumonia may be because of mycoplasma, may be because of chlamydia, legionella or viral infection, or may be due to rickettsia. So in all these cases we may use macrolide, okay. Macrolide have been shown to be effective in the treatment of all 3 organisms. Severe legionella infection may require rifampicin and a macrolide. A combination of rifampicin, which is basically an anti-tubercular drug, okay. A combination of rifampicin and macrolide may be necessary in case of severe legionella infection. Legionella के लिए और other organisms which causes atypical pneumonia, उनके लिए tetracycline, doxycycline plus fluoroquinolone are also effective regime. Recommended duration थोड़ा ज़्यादा है in case of bacterial. In case of typical or classical pneumonia, community acquired pneumonia, we may treat for up to 5 days or whatever the criteria we have discussed in the last slide.
नहीं तो अगर पेशेंट को एटिपिकल न्यूमोनिया है तो पेशेंट यूजुअली रिक्वायर्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यूजुअली अप टू 2 to 3 वीक्स। यहाँ पे कुछ एक्सरे इमेजेस है इस स्लाइड में। ये जो है दिस इज अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। lung field you can see there is nothing in the lung field bilaterally are very much clear and normal। इस एक्सरे में देखते हैं तो इसमें there is homogeneous opacity here, okay, this is the area of homogeneous opacity present at the lower upper portion of the lower lobe of right lung। in this x-ray यहाँ पे भी एक homogeneous opacity है and it is present at the upper portion, okay, or it is involving the upper lobe of the right lung। in this chest x-ray यहाँ पे भी homogeneous opacity है involving the lower portion of the left lung along with the opacity। यहाँ पे अगर हम carefully notice करते हैं तो यहाँ पे हमें एक cavity भी दिखाई देगा, this is the cavity, okay। so these are all signs of pneumonia, okay। homogeneous opacity involving a particular area of the lung is basically suggestive of pneumonic consolidation। and in the last x-ray we can even see a cavity also। हम already discuss कर चुके हैं cavity formation in common in cases of anaerobic infection in the lung or in cases of Klebsiella infection, staphylococcus aureus infection other than mycobacterial tuberculosis।